हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स का। बच्चों, हमने अपना चैप्टर मोशन में पढ़ा था कि मोशन कितनी तरह के होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन का कारण क्या है। लाइक वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इन सब मोशन के कॉजेज क्या हैं, कॉजेज ऑफ मोशन। क्यों होता है कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वॉट वॉज मोशन? वेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर और फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट अभी ए पे था, विद रेफरेंस टू टाइम हम देखते हैं थोड़े टाइम के बाद ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच गया। सो देर इज अ चेंज इन द पोजिशन। लेट अस से दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज t1 एंड दिस इज t2। विद रेफरेंस टू टाइम हम कहते हैं उसकी पोजीशन x2 हो गई। दैट इज वाई देर इज अ डिस्प्लेसमेंट। हम इसी की बात करते हैं और इसी से हम कहते हैं मोशन हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया ही क्यों। हाउ मोशन occurs and do all the motions require a reason? A cause? Do all the motion require a cause? What causes increase or decrease of the motion? जैसे हमने बात की थी एक्सेलरेशन की। क्यों एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी, मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली कि टाइम के साथ आपका मोशन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। एंड हाउ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट be changed, how direction of motion of an object can be changed। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये मोशन क्यों हो रहा है एंड व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट। सो नाउ आपने देखा होगा, अगर कोई भी एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, एंड इट इज़ मेड टू रोल ऑन ग्राउंड, तो बॉल ये नहीं है कि इट विल कंटिन्यू टू मूव, it will not continue to move forever। करेक्ट। एक बॉल आपने रोल कर दी है तो नहीं कि सदा के लिए वो चलती रहेगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव ऑल टुगेदर ऑल द टाइम। वाई सो, हम इसके बारे में देखेंगे ऐसा क्यों। सो इससे ये पता चलता है बच्चों, थोड़े टाइम के बाद जाके रुक जाएगी। सो इट विल नॉट कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर एंड विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। जब उसके ऊपर कोई भी कॉज नहीं होगा तो वो रुक जाएगी। वॉट डज इट मीन? इट मीन्स स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट अपने आप रेस्ट पे पहुंच गया, ठीक, और रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई और फोर्स उसको अफेक्ट नहीं करती। एंड स्टेट ऑफ मोशन इज नॉट नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में सदा के लिए नहीं रहता, लेकिन रेस्ट पे काफ़ी देर तक रह सकता है। फोर्स कैन नॉट बी सीन and it can only be felt। Therefore, common effects of force are
क्या है वो कॉमन इफेक्ट्स? सबसे पहला बच्चों का कॉमन इफेक्ट ये है दैट अ फोर्स may move a body at rest. हमने वर्ड यूज़ किया बच्चों मे. ज़रूरी नहीं कि फोर्स जब लगेगी तो बॉडी मूव होगी ही होगी, उसमें भी कुछ कंडीशंस आएंगी. ठीक है. अ फोर्स मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी किक अ बॉल, if we kick a football, what will happen? It will start moving. करेक्ट. अब कंडीशन दूसरी देखते हैं. इफ वी किक अ वॉल, तो व्हाट विल हैपन? वॉल विल मूव. नो, वॉल इज स्टेशनरी. सो फोर्स तो लगाई थी हमने, लेकिन वॉल तो मूव नहीं करी. सो दिस इज सम ऑफ द कंडीशंस जहां पर हम कह रहे हैं अ फोर्स मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट. दूसरी कंडीशन बच्चों क्या है? व्हाट इज द कॉमन इफेक्ट ऑफ दिस? अ फोर्स, अगेन अ फोर्स मे स्टॉप ए मूविंग बॉडी. पहले हमने कहा बॉडी रेस्ट पे थी, उसको चला दिया. दूसरा हम कह रहे हैं बॉडी मूव कर रही थी, उसको हमने स्टॉप कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, कैचिंग अ बॉल, बॉल का आपने कैच किया, बॉल स्टॉप हो गई. दूसरा देखिए, जब बुलेट स्ट्राइक्स अ टारगेट, देन बुलेट फेल्स टू स्टॉप. अब उसके देखो, बुलेट के रास्ते में कोई चीज़ तो आई थी, उसको रुकना चाहिए था क्योंकि एक फोर्स लगी थी उसके ऊपर रोकने के लिए, लेकिन बुलेट नहीं रुकती है. सो देर आर सर्टन अदर कंडीशंस जिसके अंदर फोर्स जो है या तो ऑब्जेक्ट को चलाएगी या रोकेगी, और या फिर रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चलाएगी. तीसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी. कैसे? देखिए, जब हमने बॉल को नीचे फेंका है, इट इज थ्रोन डाउनवर्ड. ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशनल फोर्स is in the direction of motion. So speed increases. यहाँ से क्या चीज़ इन्फर कर रहे हैं बच्चों? हम कह रहे हैं इफ एनी फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो स्पीड इंक्रीज करेगी, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है. और हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में होता है तो एक्सेलरेशन होती है. एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड इंक्रीज करती है. इफ द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है is in the direction opposite to the motion of ball. बॉल का मोशन अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है. सो व्हाट विल हैपन? स्पीड विल डिक्रीज. डी एक्सेलरेशन हो रहा है. सो अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन के, तो स्पीड डिक्रीज कर जाएगी. नंबर फोर्थ कंडीशन क्या है बच्चों? ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. करेक्ट. जैसे कोई बॉल आपकी तरफ आ रही थी, आपने बैट से हिट किया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी,
है ना. सो फोर्स अप्लाइड बाय बैट ऑन बॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन. आप एक और चीज़ दे सकते हो, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, सो व्हाट हैपन्स, रैकेट जो होता है वो शटल को आपको हिट करता है. तो जो बॉल शटल आपकी तरफ आ रही थी, आपने हिट किया, इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन. नाउ फिफ्थ फैक्टर में क्या है बच्चों, अ फोर्स में चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉल. जैसे आप देखो, कोई रबर की बॉल होती है या फिर कोई बलून होता है, आप उसमें हवा डालते हो, बलून की शेप चेंज हो गई. रबर की बॉल को आपने स्क्वीज़ किया, उसकी शेप चेंज हो गई. या फिर स्प्रिंग है, उसे हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल देखिए, एक सिंपल स्प्रिंग लेते हैं, ये उसकी नॉर्मल शेप थी, आपने क्या किया, उसको स्ट्रेच किया. स्ट्रेच किया तो कैसा हो गया, लाइक दिस, उसकी शेप चेंज हो गई. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपनी रूटीन में देखते हो. जैसे आप टूथपेस्ट है, आप टूथपेस्ट को लेते हो ब्रश पे लगाने के लिए, आप क्या करते हो, पेस्ट को स्क्वीज कर रहे हो, सो यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ द ट्यूब. सिमिलरली क्ले को आप किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो. देन चपाती, आपने देखा ही है, हम लोग एक सिंपल डो लेते हैं, उसे प्रेस करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वी गिव इट अ पर्टिकुलर शेप एंड साइज ऑल्सो, या तो बड़ा या छोटा, या ट्राइंगल या राउंड और स्क्वायर, और एनी शेप यू कैन गिव टू दैट. So how we can define force? Force is an external effort in the form of pushing, pulling, stretching, compressing, क्योंकि बॉल को हमने कंप्रेस किया था, compressing, which may move, which may move a body at rest or stop a body in motion or change the speed, direction or size and shape of the body. ये हो गई हमारी फोर्स, यानी कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट जिसकी वजह से एक बॉडी जो मूव कर रही थी वो रुक जाए, रुकी हुई बॉडी चल पड़े, उसकी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए, या किसी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप चेंज हो जाए, उसे हम बोलते हैं फोर्स. नाउ फोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप बच्चों, या तो बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड. अब बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है बच्चों, इफ resultant of all forces acting on a body is zero, force is said to be balanced. करेक्ट, यानी जब फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग रही हो, एक इस डायरेक्शन में लग रही हो, तो जितनी फोर्स इसमें लग रही है उतनी ही फोर्स इसमें लग रही है. दिस इज फोर्स 1, दिस इज फोर्स 2. इफ फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2, करेक्ट, एंड F1 plus F2 is equal to 0, then it is a balanced force. So balanced force अगर हो जाए, will not change position of a body. माने
body at rest remains at rest and body in motion continues to move with same speed in same direction, right? So this is what is the balanced force. So now what is unbalanced force? If the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced force, राइट? इसका मतलब देखिए, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है. इसकी डायरेक्शन अगर इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, सो वी विल राइट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर. व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट? इट इंडिकेट्स डायरेक्शन, जस्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन, यानी कि F1 से ऑपोजिट है F2, राइट? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है, करेक्ट? लाइक दिस एक बॉक्स पड़ा है. अब इस बॉक्स के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं बच्चों? देखो, पहली फोर्स ये जिससे हम इसको मूव करना चाह रहे हैं, सो दिस इज द फोर्स ऑफ पुल. हम इसे खींच रहे हैं. अब देखिए, अगर हम इसको खींचेंगे तो एक फोर्स इसके ऑपोजिट लगती है. दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? एक फोर्स देखिए नीचे की तरफ लगेगी. कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. उसका वेट जिसकी वजह से वो पड़ा है, दैट इज m मास इंटू g. व्हाट इज g? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? सो नाउ द वेट ऑफ द बॉक्स इज मूविंग डाउनवर्ड, that is going to keep it stationary. To this force there is another force, that is R. This is the force applied by this table on the box because it is against this force. When, let us mark it as R1, this is R2. R1 is equal to R2. That is why the object is at rest. Now, if push is more than the force of friction, that is P is more than F, then object moves in the direction of push, right? So इसका मतलब object will move in right hand side. So let us look at another example. If you are holding a briefcase, let us say this is the briefcase, right? Now the briefcase का weight जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, that is mg. Weight of suitcase and gravitational force, right? ये नीचे की तरफ लग रही है. Let us mark both of these together as R1. To the same reaction there is another force, that is the pull by a hand. हमारा हाथ उसे खींच रहा है ऊपर, that is P. Now since P is equal to the weight and the gravitational force, so briefcase is stationary.
सिंपल देखो एक और, टग ऑफ वॉर, आप लोगों ने गेम भी खेली होगी, टग ऑफ वॉर, दिस इज द सेंटर पॉइंट, ठीक। एक फोर्स रोप के ऊपर इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, लेट अस से दिस इज फोर्स 1 एंड दिस इज फोर्स 2। क्यों लग रही है? बिकॉज वन पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, अनदर पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, हु इज गोइंग टू पुल द बॉल, ठीक है। रोप को आप खींच रहे हो, देर इज अ पुश, देर इज अ पुल, दिस इज सेकेंड फेलो, दिस इज अ फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट का जो पुल है वो सेकेंड के पुल के बराबर है, या first force is equal to the second force. So since both are equal and it is a balanced force रहती है, so no motion, करेक्ट। अब अगर मान लीजिए टग ऑफ वॉर में किसी को एक को जीतना है तो कोई एक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। सो अगर F1 is not equal to F2, then motion occurs, correct? So third example is when we stop pedaling a cycle we are riding, then the bicycle stops. क्यों? क्योंकि ये देखो साइकिल के ऊपर एक फोर्स लग रही है, जब आप पैडल कर रहे हो तो टायर जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स उन्हें पीछे की तरफ खींच रही है। सो अगर फ्रिक्शनल फोर्स मोशन ऑफ टायर से ज़्यादा हो जाए, यानी कि फोर्स ऑन टायर्स से ज़्यादा हो जाए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन साइकिल विल स्टॉप। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट अनबैलेंस्ड force is required to initiate the motion of cycle, but once in motion it will continue as long as the unbalanced force is acting. Once this force is removed, which one? Unbalanced force. Once this force is removed, the object will continue to move with the velocity it has acquired till then. मतलब जब हमने फोर्स लगाई तो जितनी वेलोसिटी उसने अटेन की, फोर्स हटाने के बाद उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करती रहेगी। देयर विल बी नो फर्दर चेंज in the velocity in the absence of an unbalanced force. So unbalanced force is needed to move a body from state of rest to state of motion. But no such forces is required to maintain uniform motion.
यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें कोई ऐसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. राइट. सिमिलरली देखो एक और देखते हैं. बॉल सेट रोलिंग on the ground stops after some time due to unbalanced force of friction and ball, and ball comes to rest. There is a scientist, Galileo. He made certain observations on the motion of an object. उनकी क्या वो observations थी on motion of objects, and he carried out this experiment by observing their motion on an inclined plane. Let us look at what is this experiment is. Let us take a plane. This is the ground state. और इसके ऊपर हमने एक inclined plane रखा है. And we made a ball to fall down from here. This is the height to which we have raised the object. And this is the theta with which we have inclined the plane. This plane is a frictionless plane. And theta is the angle to which plane is inclined to a height h. ठीक. Now he says जैसे ही ये बॉल यहाँ रोल करेगी, it is going to move तो जब बॉल यहाँ से नीचे रोल करेगी तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है? ग्रेविटेशनल. नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग in the direction of motion of ball gives an increased speed to it, and the ball continues to move on the ground with this acquired speed. यानी एक बार उसने वो स्पीड एक्वायर कर ली क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे लेके आ रही थी. नीचे आने के बाद इट विल कीप ऑन मूविंग विद अ वेलोसिटी. So ball will keep on rolling with a definite velocity. क्यों? Because surface कैसे? Frictionless. उनको कोई और unbalanced force नहीं लग रही है. So the ball will keep on moving with a uniform velocity. But what if we keep on increasing the angle? Let us say we have increased some angle over here. ठीक? डिफरेंट एंगल्स ले लिए. चलिए मार्क करते हैं. सबसे पहला सरफेस ले लेते हैं ये वाला. सो दिस इज थीटा 1, देन थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4. Three, 4, and 5. Right? Let's mark that this is the inclined surface S.
राइट. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बनता है? द बॉल then climbs up the inclined surface one on right hand side. Velocity keeps on decreasing. Due to gravitational force opposite to motion of ball. अब बॉल देखो ऊपर चढ़ना चाह रही है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है? बॉल वॉन्ट्स टू मूव अपवर्ड एंड द ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, सो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना. सो थर्ड पॉइंट देखो, अगर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा हो जाए, यानी ये थीटा इस थीटा के बराबर हो जाए, ये एंगल, दिस एंगल becomes equal to this, so what will happen? This height will be same, this h will be same. थीटा 1 थीटा 2 के बराबर, तो s1 s के बराबर या h1 h के बराबर हो जाएगा. Let us say this is the h1, right? और अगर थीटा 2 छोटा हो जाए थीटा 1 से, तो what will happen? Then h2 will be less than h1 or s2 will be less than s1. h2 will be more, sorry, h2 will be more, s2 will be more. Q. Okay, look at it. हमने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को नीचे फेंका. दिस वॉज h1 h और ये है आपका s. हमने एक एंगल के साथ उसको फेंक दिया. दिस इज द थीटा जिसे वो नीचे आ रहा था, एंड दिस इज थीटा 2. अब ये एंगल छोटा है, थीटा 2 इज लेस देन थीटा. इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, जो ट्रैवल करेगा बॉल, दिस विल इंक्रीज, दिस इज s2, सो s2 विल इंक्रीज. बट ये जो हाइट है, दिस इज गोइंग टू बी सेम. ये तब तक ऊपर 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 जाएगा तब तक जब तक कि h2 h के बराबर ना हो जाए. सो द कंडीशन इज दैट h2 हैज़ टू बी इक्वल टू h1. सिमिलरली if the inclination is reduced on right hand side, then distance covered keeps on increasing. Distance covered का मतलब s will keep on increasing. So हम कह सकते हैं कि थीटा 4 कम है थीटा 3 से, थीटा 2 से और थीटा 1 से. और अगर थीटा 1 भी थीटा से 0 हो तो what will happen? s4 will be more than s3, will be more than s2, will be more than s1, will be more than s, because ball will keep on moving to attain the same height from which it was made to roll. जितनी हाइट से उसको गिराया गया था वो उतनी ही हाइट अचीव करना चाहता है, इसीलिए ये इंक्लिनेशन बढ़ता चला जाता है. सो वी कैन से, बट इन ऑल द केसेस height attained by the ball before stopping on right hand side is same as the height from which it fall. So हर कंडीशन में h1 हमेशा h2 के बराबर होगा. नंबर 6 पॉइंट क्या था उनका, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी?
If the right side plane is horizontal, then the ball will reach will keep on moving forever, trying to reach the same height from which it was released. But कब? Only if unbalanced forces are zero. So, Galileo concluded that unbalanced forces are required to initiate the motion, but no unbalanced force is required to sustain the uniform motion, that is, objects move with a constant speed along a straight line when no force acts on them, जब उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती. लेकिन हमें ये भी पता है प्रैक्टिकली friction is present. So, some unbalanced force is required to move objects with constant speed along a straight line. ठीक? So let's move on to our new topic, that is Newton's law of motions. पहले हमने पढ़े थे इक्वेशंस ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 7 में. अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. हुआ क्या एक्चुअली, न्यूटन further investigated Galileo's ideas and formulated 3 laws of motion. तो देखते हैं कि तीनों लॉज कौन कौन से थे. फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी continues to be in the state of rest, uniform motion, along a straight line, rest or uniform motion along a straight line
unless some unbalanced force is applied. On the body to change that state. मतलब बॉडी के ऊपर जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती है तब तक अगर वो चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, या जिस भी डायरेक्शन में वैसे ही चलती रहेगी. ठीक, जैसे बुक लाइंग ऑन अ टेबल until someone moves it from table. जब तक उसको कोई उठाएगा नहीं वहां से तब तक वो बुक वहीं पड़ी रहेगी. Second law of motion. When engine is switched off, stop paddling, then it stops after some time due to friction. If friction is not there, it will keep on moving with uniform motion. मतलब ये है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हमने स्पीड देनी बंद कर दी वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा. दिस इज द सेकेंड लॉ. Then come to this third law of motion. A body moving along a straight line will continue to move in the same direction unless an external force is applied on the body to change its direction of motion. For example, okay बच्चों, just make a correction. This is not the third law. ये first law के अंदर ही third part है. This is the second part of first law. Second part of first law. पहले में क्या था, कोई चीज़ रुकी हुई है या चल रही है तो कंटिन्यू करेगी इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम मोशन जब तक फोर्स ना ले. दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो रुक जाएगी अगर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड हो, और अगर कोई फोर्स अप्लाई हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. सो यानी कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ चल पड़े या रुका हुआ चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाए या चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए. ऑल थ्री कम्स अंडर द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कार एट अ राउंड अबाउट. देखिए कार अगर एक राउंड अबाउट पर है, इट वॉज मूविंग द सेम डायरेक्शन. दिस इज द कार इन द सेम डायरेक्शन. अब जब इस डायरेक्शन में मूव करना है तो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ फोर्स. दैट फोर्स इज व्हाट, योर स्टेयरिंग. स्टेयरिंग के साथ हम यूज करते हैं फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज डायरेक्शन. तब तक सीधी चलती रहेगी जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते. सो
Newton's first law defines force as an external effect to actually, number one, move or try to move from rest. Number two, stop or try to stop moving body. Number three, changes or try to change the direction of motion of the body. So these are the three things that Newton explained in the first law. यहीं से एक टर्म और निकल के आई बच्चों, that was the inertia. What is inertia? All bodies resist change in their state, or objects oppose the forces that try to change their state. This property to resist change in state is called inertia. आप सिंपल कह सकते हो, to resist change in state is called as inertia. So inertia क्या है? Inability of the body to change its state on its own. Inertia is inability of body to change its state on its own. तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है बच्चों, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called as law of inertia. ये तो हुआ इसका क्वालिटेटिव वर्जन, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट कि क्या होगा इनर्शिया, कैसा होता है ना. सो क्वांटिटेटिवली इनर्शिया ऑफ द बॉडी इट इज मेजर्ड बाय, ये तो हुआ क्वालिटेटिव. लेकिन अगर मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली कह लो या आप उसे मैथमेटिकली कहिए, इनर्शिया is measured by the magnitude of force required to move the body. ठीक, किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. सो इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर द बॉडी या लार्जर द फोर्स रिक्वायर्ड, लार्जर विल बी इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी. फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ट्रक को अगर हिलाना हो तो बहुत फोर्स लगेगी, साइकिल को हिलाना तो कम फोर्स लगेगी. सो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? इंडीड ट्रक का ज़्यादा होगा. सो आप कह सकते हो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स.
So, mass of the body is a measure of inertia of the body. माने जो भारी चीज़ है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, भारी कोई चीज़ होगी इसका मतलब उसका मास ज़्यादा है. So जिसका मास ज़्यादा होगा, mass of the body is directly proportional to inertia. More the mass, more is the inertia. तो अब इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं. हमारे पास कई तरह का इनर्शिया आएगा. बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बैठा है. दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रोकना है. एंड देन थर्ड इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को मूव करने के लिए कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी. सो फॉर एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखिए, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड द पर्सन सिटिंग falls inside. Person sitting inside falls back. ऐसा क्यों हुआ? इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कि बस में बैठा हुआ बंदा अगर बस रुक कर चलती है तो पीछे की तरफ गिरता है. ऐसा क्यों होता है? देखिए क्यों. नंबर 1, बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स विद बस. आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, आपके पैर बस के फ्लोर के ऊपर हैं, बस चली तो आपके पैर भी चल पड़े. द बस मूव्स विद, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स विद बस, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल इन रेस्ट और स्टिल इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, इसी वजह से सो व्हेन inertia of rest, because lower part of the body moves with bus but upper part of the body is still in the inertia of rest. That is why we tend to fall back. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. when we shake vigorously a branch, किसी भी ब्रांच को, पेड़ की, of a tree, जब हम किसी भी पेड़ की ब्रांच को बहुत तेज़ी से हिलाते हैं तो हम जैसे कि फूल गिर जाते हैं या मैंगोज या कोई भी फ्रूट गिर जाता है. लेट अस टेक एनी फ्रूट हो या फिर फ्लावर हो, दे फॉल डाउन. ऐसा क्यों हुआ? देखो, ब्रांच को हिलाया, ब्रांच मोशन में आ गई. फ्रूट और फ्लावर अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट of due to inertia of rest of flower and fruit, while branch of a tree comes in motion. ब्रांच तो मोशन में आ गई लेकिन फ्रूट और फ्लावर अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे, इसीलिए वो टूट के गिर गए. ठीक. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या आता है इनर्शिया ऑफ मोशन का. कहता है बस चल रही थी, स्टॉप्स सडनली. जब बस रुकती है, पर्सन सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड. क्यों? बिकॉज व्हेन बस स्टॉप्स, lower part of the body also comes to rest.
but upper part of the body is still in motion. Therefore, due to inertia of motion, person tends to fall forward. सिंपल. नेक्स्ट हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. कार rounds a curve suddenly and the person is thrown outwards. ऐसा क्यों हुआ? सो देखिए, ये है आपका एक राउंड अबाउट. कार जो है वो यहाँ से मूव कर रही थी. टू पीपल आर सिटिंग हेयर. ये कार ऐसे जा रही थी. ऑल ऑफ अ सडन कार टेक्स अ टर्न इन दिस डायरेक्शन. नाउ ये मोशन था, गाड़ी इस तरफ मुड़ गई. हम किस मूवमेंट में अभी भी? स्टेट में है. सो जब कार इधर मूव करती है तो वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, यानी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो वी कैन से व्हेन कार rounds a curve suddenly, person is thrown outwards because when car turns towards round, the body is still in the forward direction, is still in the straight direction, straight line motion. So, due to inertia of motion or inertia of direction, person tends to be thrown outwards. So this is what is the inertia of direction. सो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है. इसके ऊपर बहुत सारी एग्जाम्पल्स और बनती हैं. यू मस्ट अंडरस्टैंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एक नई टर्म है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम. सबसे पहले हमें देखना है कि लीनियर मोमेंटम है क्या, फिर हम इसको क्वांटिफाई करेंगे. Linear momentum of a body as the product of mass of the body and velocity of the body. यानी कि लीनियर मोमेंटम को हम एंड इट इज डिनोटेड बाय पी. पी के ऊपर हम एक वेक्टर लगाते हैं. दिस इज नोन एज अ वेक्टर. और वेक्टर के अंदर ये जो एरो है पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और हमने कहा कि ये जो P है इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब मास जो है बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमने पढ़ा है. और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है जो चेंज हो सकती है. सो दैट इज़ वाई वी राइट इट एज P वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू V वेक्टर. सो momentum is a vector quantity that depends on both direction and magnitude. So what is the SI unit of
मोमेंटम, देखिए दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मास की यूनिट है SI kg, वेलोसिटी की है मीटर पर सेकेंड. सो मोमेंटम की SI यूनिट क्या हो जाएगी? kg मीटर पर सेकेंड और kg मीटर पर सेकेंड. सो देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. सो मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0. क्यों? मास इंटू वेलोसिटी. सो मास तो कांस्टेंट है, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 0, तो वेलोसिटी मोमेंटम भी 0 हो जाएगा. नाउ इफ ऑब्जेक्ट is in motion, so definitely velocity will have some value, so it will also have some momentum. Now any force will change, किसको चेंज करेगी? मास को या वेलोसिटी को? बिल्कुल, any force will change velocity but not mass. So we can say momentum is directly proportional to velocity. जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा मोमेंटम, जितनी कम वेलोसिटी उतना कम मोमेंटम. सो देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या हैं बच्चों. एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो क्वेश्चन क्या है? जैसे कहता है कि आपने देखा होगा क्रिकेटर होता है, जब क्रिकेट बॉल आती है तो अपने हाथ को वो बॉल को हाथ में लेता है और पीछे की तरफ मूव करता है हाथ को. ऐसा क्यों होता है? देखिए टीटी की जो बॉल होती है बच्चों, वो हर्ट नहीं करती. क्यों नहीं हर्ट करती? बिकॉज मास कम है उसका. क्रिकेट बॉल हर्ट करती है, क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, भारी होती है. मूविंग विद सेम वेलोसिटीज. सो अगर वेलोसिटी सेम हो जाए तो देखिए मोमेंटम ऑफ टीटी बॉल देन मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल. अगर आप इनको देखेंगे तो क्या लिखोगे आप? मास ऑफ दिस टीटी बॉल इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ क्रिकेट बॉल इंटू वेलोसिटी, velocity of TT ball and velocity of cricket ball. Now velocity of TT ball is equal to velocity of cricket ball. So momentum किसका ज़्यादा हो जाएगा? क्रिकेट बॉल का ज़्यादा मास है. So momentum of cricket ball will be more than the momentum of TT ball because mass of the cricket ball is more than the mass of tennis ball. दूसरी चीज देखते हैं बच्चों. ट्रक at as low as 5 मीटर पर सेकेंड. अगर ट्रक धीरे भी चल रहा हो, इट कैन किल अ पर्सन. वाई सो? ड्यू टू मास. ट्रक का मास काफ़ी ज़्यादा होगा फ्रॉम द मास ऑफ द पर्सन. राइट? सो इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, सो इट कैन हर्ट द पर्सन. तो एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों. बुलेट का मास बहुत थोड़ा होता है. अभी तक हम मास जिनका ज़्यादा उसकी बात कर रहे हैं. बुलेट मास इज़ वेरी वेरी स्मॉल. बहुत छोटी सी गोली होती है, बट स्टिल किल्स बिकॉज मोमेंटम इज़ हाई, मोमेंटम इज़ लार्ज. क्यों है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. हेयर velocity is very very high, so kills. Correct? So this is what is the practical application of linear momentum. So बच्चों आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेकंड और
थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की. सो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.